अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगी कि आप अपनी सिम को इंटरनेशनल कैसे कर सकते हैं। आप मुल्क पाकिस्तान मौजूद है या आप मुल्क पाकिस्तान से बाहर है, इट डजेंट मैटर। मैं आपको बताऊंगी कि आपने सिम को इंटरनेशनल कैसे कर सके। इससे पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल की आइकन पर क्लिक करें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोस आप तक बसानी पहुंचते हैं। आप पाकिस्तान से जांच किए या पाकिस्तान में मौजूद है, आप क्या करेंगे, आप गूगल ऐप में जाएंगे और इसमें हम टाइप करेंगे जायज इंटरनेशनल टैरिफ। अपनी स्क्रीन पे इंटरफेस आएगी। जब आपकी स्क्रीन पे इंटरफेस आएगी, आप इंटरनेशनल रोमिंग टैरिफ सेलेक्ट करना है। वीडियो को एंड तक ध्यान से देख लो, मैं आपको तफसील से सब कुछ समझाऊंगी। सबसे पहले सेलेक्ट की बॉक्स पर क्लिक करो और इसमें दो सिम्स के ऑप्शन आएंगे, एक होंगी जाज और दूसरी होंगी वरीड। तो अगर आप जाज को इंटरनेशनल करना चाहते हैं तो जस्ट पर क्लिक करो, या अगर वरीड को इंटरनेशनल करना चाहती तो वरीड पे क्लिक करो। मैं जस्ट सेलेक्ट करूंगी और वो भी होंगी प्रीपेड। अनदर ऑप्शन आएगी वे आर यू ट्रेवलिंग। इसमें जिस कंट्री में आप जाना चाह रही हो इस कंट्री पे क्लिक करना है। अगर आप अमेरिका जाना तो अमेरिका पे क्लिक करो, अगर सऊदीया जाना सऊदीया पे क्लिक करो, कोई भी मुल्क। अगर इटली जाना इटली पे क्लिक करो। ये देखो मैं स्पेन जा रही हूँ तो स्पेन पे क्लिक करूंगी। उसके बाद आप कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है। इसमें होंगी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन whereby you have to write everything concerning where you're traveling, email and everything. Isme you have to fill in your nature of query. If you have a complaint, so you click on complaint. Gal koi inquiry, you click on inquiry, or any other. You just click on what you want to apply for. Second, your full names. Here you have to enter your full names. Let's assume my name is Karne, so I have to fill in Karne. Third, your contact number. Then here comes a part where you have to fill in your email. Uske baad you select the city, matlab the city where you are living. Uske baad you have to enter the customary remark concerning your application. Next, I agree to terms and conditions. Yaha you have to tick the box showing that you have agreed to the terms and conditions. उसके बाद अपना फॉर्म ध्यान से recheck करें। उसके बाद you are free to submit. For more information I'm going to share with you the number in the description. Please try to check it out. उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद होगी। पसंद आने की सूरत में मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।